हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव। नमस्ते, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। थोड़ा सा लेट हो गई ये पॉडकास्ट बनाने में। वैसे तो ये पॉडकास्ट मुझे 1 मई को ही भेज देना चाहिए था, because this podcast talks about one of the most awaited transits, जिसका सब लोग जिनको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है वेट करते हैं, because they know how this transit can change the course of your life. But you know that हर पॉडकास्ट में मैं आपको एक बात ज़रूर बताती हूँ कि जो पॉडकास्ट्स होते हैं ना और जो प्रिडिक्शंस होती हैं उनको बहुत आराम से बैठकर सारी कैलकुलेशंस करने के बाद निकाला जाता है, एंड वन शुड नॉट से एनीथिंग विच कैन बी रॉन्ग, बिकॉज ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी इज़ वन ब्रांच ऑफ अ शास्त्र। एक ये ऐसा नॉलेज का ग्रंथ है जो कि साधना से कम नहीं है। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू वन थिंग, दैट एस्ट्रोलॉजी डज नॉट कम वेरी ईजी टू एवरीवन, एंड हर किसी के लिए एस्ट्रोलॉजी होती भी नहीं है। एंड दैट इज़ वाई हम ये बोल देते हैं कि कुछ लोगों को they make fun of it, or they use it for their own convenience, or they misuse it sometimes, or you see that people have made this so casual that Instagram and social media is full of so much nonsense only because people want to make it sound as if this is some sort of a mockery. And it's just like a demand and supply kind of a thing. जिसकी डिमांड होती है वैसी ही सप्लाई हो जाती है. But if I tell you seriously, astrology is a shastra. It is not meant for everyone. It was only meant for the kings in the olden times, because ऐसा मानते हैं that ज्योतिष आपको बुलाता है, means it can only go to people who carry that intellect, who carry that essence, that ethos, to understand the depth and the calculation of this subject. So उसी भाव के साथ मैं पॉडकास्ट बनाती हूँ, और उसी भाव के साथ उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग सुनते होंगे, समझते होंगे, शेयर करते होंगे, and not make it sound like it's very casual. And because I'm sure most of you don't know your Rashi or your Chandra Rashi or Surya Rashi or your name Rashi also. So I don't like to give predictions based on Rashis, but I always try to give some general predictions so that you are just made well aware of how the cosmic energies are going to behave for the next whatever time, and you can align your karma, you can align your action according to how the universe, how the cosmic energies are going to behave. So the reason why I'm making this podcast is to talk about the movement of Jupiter. Jupiter, जिसको हम गुरु बोलते हैं, which is the largest planet of the solar system. It is yellow in color. The aspect of Jupiter is knowledge, spirituality, all your pure essence that you have inside you. It is the guru. It is the protector of our own planet Earth. I've told you many times that it so happens that studies of NASA have also shown that whenever there is a meteor attack on Earth, or any sort of any attack, it could be a meteor or an asteroid attack, the Jupiter planet just comes between
that and planet Earth just to save it. So brings me to explaining the fact that how the Jupiter element is important in your life, how the Guru element is important in your life, जिसके कारण आप शायद आने वाली बहुत सारी मुसीबतों से बच सकते हो. हम सबके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति होती है, पर हर कोई उसको जान नहीं पाता, पहचान नहीं पाता, क्योंकि गुरु नहीं मिलते. सो स्पिरिचुअलिटी which comes to us from the planet Jupiter, and because Jupiter is one of the 9 planets, clearly shows that we all have that aspect inside us. But depending on where the Jupiter is placed in your chart, we can tell you what it is. Like sometimes Jupiter is with Rahu in someone's chart. So I have seen in my experience that, and इसको हम गुरु चांडाल दोष बोलते हैं. So Guru Chandal Dosh, just the word itself shows that these are the people who are like wolf in a sheep's clothing, or they are something else from inside, and they will show to be really, really nice and pious and pure from the outside. And if you see their charts, that is a Guru Chandal Dosh. The planet Jupiter is sitting with Rahu. So all their life they always lie, they cheat. You should not trust them. Their face value should never be trusted. On the other hand, if Jupiter is placed well, then that becomes an Amrit Yoga in your chart. If Jupiter is placed in one of its friendly rashis, or it is exalted in anyone's chart, then you can actually even go down to saying that you can just close your eyes and make friends with such people, marry such people, because they carry a lot of beautiful, pious, pure karmas from their past. Now another question here comes is that ये कलयुग चल रहा है, and many times I have seen also that people who have a very good Jupiter in their horoscope often get cheated by people. They get used by people because they are very pure in their heart, but you find all these fake people around, so yes, that is also truth, where I have seen that people who have a very good Jupiter often get cheated by people, often get used by people. But then again, when you get your horoscope analyzed and when you come for a spiritual consultation, आपको सिखाया जाता है कि किस तरह से आप इस उच्च के गुरु को या अपने अच्छे जुपिटर को आप यूज़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो. I have also seen that people who have a good Jupiter in their chart are always blessed. Good family, good homes, good marriage, good children. Because Jupiter is संस्कार. गुरु से हमें संस्कार मिलते हैं. तो कभी कभी जब आप देखते हो कि एक इंसान के पास सब कुछ है, अच्छा जीवन है, बस वो ब्लेस्ड है, तो उनके जब हम हॉरोस्कोप्स देखते हैं तो कोई भी मज़हब हो उनका, कोई भी मज़हब हो, इट डजंट मैटर, उनका गुरु बहुत अच्छा होता है क्योंकि उन्हें ब्लेसिंग्स पूर्व जन्म से मिल रही होती हैं. ऐसे ही जब आप देखें कि किसी का गुरु अच्छा नहीं है या नीच का गुरु है, तो उसके जीवन में हमेशा कोई ना कोई अभाव रहेगा. बच्चे नहीं होंगे, और बच्चे होंगे तो बहुत तंग करेंगे. घर नहीं बनता बहुत समय तक, कोशिश करने के बावजूद भी कर्जा नहीं उतरता, घर नहीं बनता. ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये कहीं ना कहीं जब गुरु हमारे खराब होते हैं उसकी वजह से होती हैं. तो आप ये मान लीजिए दैट हैविंग अ गुड गुरु इन योर लाइफ इज़ लाइक अ ब्लेसिंग इन योर लाइफ, बिकॉज गुरु जो हैं वो हमेशा आपको आशीर्वाद ही देते हैं. So the transit that I'm going to talk about today is 1st of May 2024 से लेकर 14th of May 2025 तक, यानी कि 1 साल से थोड़े ज़्यादा समय तक the planet Jupiter has come into the sign of Taurus. यानी गुरु जो हैं वो वृषभ राशि में आ चुके हैं 1 मई को, और जो 14 मई 2025 तक वहाँ पर रहने वाले हैं. Now, Jupiter completes the cycle of all the
12 zodiacs in 1 year. Okay, there are 12 zodiacs, we all know that. And if Jupiter stays in one zodiac for a little more or little less than 1 year, so it means that it completes its entire cycle in 1 year. हर राशि में एक एक साल रुकते हैं. तो अब जो है गुरु वृषभ में आ गए हैं, टॉरस में आ गए हैं. अब टॉरस किसकी राशि होती है? टॉरस होती है शुक्र की राशि. इट बिलोंग्स टू द प्लैनेट वीनस. नाउ शुक्र को दैत्यों का गुरु माना गया है. ही इज लाइक द गॉड ऑफ द डीमंस. एंड जुपिटर को देवों के गुरु बोला जाता है. देवों के गुरु बृहस्पति बोलते हैं ना. सो जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ द पॉजिटिव एनर्जीज and Shukra is Daitya Guru, yani we relate him to all the material world comforts and the greed and the hunger and the lust and blah blah blah. And Jupiter is all the sattvic energies, the sattva of life, right? Now if by saying this you can imagine that when Jupiter is going to be sitting for 1 year in Taurus, which happens to be a very materialistic sign, it is the sign of Venus, he is not going to be comfortable there, which means that एक दुश्मन राशि में आकर जो है गुरु बैठ जाएंगे. एक संत को आप एक बहुत बड़े जो बहुत ही मटीरियलिस्टिक राजा होता है उसके घर अगर आप बिठा दोगे तो वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे. अब इससे क्या होगा? इसको दुश्मन राशि बोला गया है, लेकिन इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि गुरु अपनी पॉजिटिविटी को एक्सप्रेस नहीं करेंगे. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गुरु अपने पावर को लूज कर देंगे. आई एम नॉट सेइंग दैट ही विल लूज हिज पावर. ओके, आई एम ओनली सेइंग दैट ही विल नॉट फील लाइक एक्सप्रेसिंग हिज sattva. He will not feel like expressing his power in this because it's going to be too conflictive. आप सोचिए कि आप एक सात्विक इंसान को किसी राजसिक या किसी तमस की पार्टी में ले जाके आप बिठा दो जो केवल शुद्ध शाकाहारी होता है, और आप उसको एक मांसाहारी इंसान के घर पे ले जाओ तो वो क्या करेगा? वो चुपचाप बैठा रहेगा, वो किसी से कोई बात नहीं करेगा, वो ये भी नहीं बोलेगा कि शाकाहारी भोजन खाने से बहुत अच्छा होता है. He will just keep quiet. He will choose to be quiet. This does not mean that he is losing his power or he is getting carried away by the tamas. It just means that he finds it absolutely irrelevant to be there and he does not want to talk about anything because he knows that the tamasic person will not understand. ठीक ऐसी ही परिस्थिति आने वाली है जहाँ पर 1 साल के लिए गुरु जो हैं वो शुक्र की राशि में होंगे, टॉरस में होंगे, और यहाँ से क्या हो सकता है वर्ल्ड वाइड सिचुएशंस में मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ. एंड फॉर दिस आई वुड लाइक टू टेक यू बैक 12 years बिकॉज ये क्या है ना कि अब ये जो 1 साल आ रहा है इसमें सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो होने वाली हैं वो हैं इलेक्शंस. भारत में लोकसभा इलेक्शंस और अमेरिका में इलेक्शंस. And what is going to happen, I'll try to explain this to you so that you can just relate it a little bit. आप देखिए 12 साल पहले यानी आप जाएं 2012 में. In 2012, what happened on 6th of November, I think 2012, in the American elections was that Barack Obama got re-elected, right? In the same year, if I'm not mistaken, जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे गुजरात में, तो हमारे जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं ही गॉट री इलेक्टेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात. दिस टाइम लुक्स लाइक अ लिटिल बिट ऑफ अ पावर स्ट्रगल, ओके, बिकॉज द सेम ट्रांजिट, तब भी यही ट्रांजिट था. गुरु जो है वो वृषभ में थे, पर ऑब्वियसली इस बार जो है राहु और मंगल अभी साथ में हैं, शनि एक्वेरियस में हैं. सो ये सब ट्रांजिट्स को भी हम देख रहे हैं टू कम टू द क्लोजेस्ट कंक्लूजन ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन. बट फॉर श्योर ये जो योग, प्रबल योग जो बन रहा है वो बन रहा है री इलेक्टेड होने का.
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है उसका री इलेक्टेड होना ऑलमोस्ट तय है, बट इट माइट नॉट बी दैट ईजी। कुछ जद्दोजहद है, यू नो दैट अलायंसेस फॉर्म हो रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। विनिंग स्मॉल बैटल्स डज नॉट मीन दैट यू विल विन द वॉर, ये भी आप ध्यान रखिए। ये शायद प्राकृतिक भुलेखा हो सकता है कि अगर आप छोटी छोटी जीत में खुश हो रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े युद्ध में भी विजयी हों, क्योंकि जब डंका बजेगा विजय का, तो विजय का डंका उसी का बजेगा जो कि गुरु के साथ गुरु की वैल्यूज़ को फॉलो करता है। मीन्स यू आर लेड बाय वैल्यूज़। तो आप ये देख सकते हैं जनहित में, यानी पीपल और लीडर्स हु हैव वर्कड फॉर द बेनिफिट ऑफ humanity, benefit of their country people, benefit of the common man will truly be a victor. इसमें दिखावा कुछ भी नहीं है, आप नहीं कर सकते दिखावा। इसलिए मैं तो ये बोलूँगी कि for all the people who are still yet to vote, please vote judiciously. Think about the next 10-15 years, think about what kind of a leadership you need, and please vote for the leader. Okay, and think about it, think before you cast your vote. So अमेरिका में भी मुझे लग रहा है कि जो बाइडन ही वापस री इलेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज इलेक्टेड होने का एक योग बन रहा है, और ऐसा ही 2012 में भी हुआ था। इसके अलावा जो मुझे लग रहा है, वेयर आई कैन गो बैक टू द स्टॉक मार्केट करेक्शन or the great American recession, I think way back in 1929. I would say that कुछ जब गुरु टॉरस में होते हैं, वृषभ में होते हैं, तो हमेशा एक करेक्शन होती है मार्केट की। तो मेरे को स्टॉक मार्केट की एक बहुत ज़बरदस्त करेक्शन नज़र आ रही है यहाँ पर। ट्रांसपोर्ट, सैटेलाइट, ये सब जो एरियाज़ हैं यहाँ पर थोड़ा सा हमें इफ़ेक्ट होगा, बैंकिंग सेक्टर्स में इफ़ेक्ट होगा। मैं पहले ही आपको अपने प्रीवियस पॉडकास्ट में बता चुकी हूँ कि किन किन एरियाज़ में, किन किन सेक्टर्स में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एंड गुरु का टॉरस में होना इन चीज़ों को मैग्नीफाई भी कर सकता है। नेचुरल कैलामिटीज़ में मुझे earthquakes around the world नज़र आ रहे हैं। I'm not talking just about India, I'm talking about the world, because Taurus जो है वो earth element है, तो गुरु का वहाँ पर आना कहीं ना कहीं हमें earthquakes भी शायद ऐसे आए जहाँ पर थोड़ा खतरा या जान की हानि हो सकती है। इसके प्रबल योग मुझे दिखते हैं। Beyond that, and by the way, the earthquake of Gujarat, which is one of the biggest in the history of India, भारत की जो इतिहास में सबसे बड़ा जो एक earthquake था 2001 में, तब भी जो है गुरु टॉरस में थे। तो गुरु के टॉरस में होने से ये सब तो मुझे दिखाई दे रहा है, और सूर्य जो है वो गुरु को ज्वाइन करेंगे अब एक दिन बाद। हमेशा 14-15 को जो संक्रांति होती है उसमें सूर्य अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं। इस समय सूर्य जो हैं वो शुक्र और बुध के साथ मेष में हैं, एंड नाउ अर्ली टुमारो सन विल जॉइन जुपिटर in the sign of Taurus. Okay, so Mars is already with Rahu making an Angarak Yog. Yuddh means wherever there is a war happening right now, it could be Israel, it could be Iran, it could be Palestine, it could be Russia, wherever there is this kind of a situation that has occurred, I see that becoming even worse. I see more countries participating in the war,
and I definitely see more negativity, and I definitely see more warlike situations, more violent situations, anger issues, accidents, hemorrhages, heart issues increasing because of these two transits. So we definitely need to be a lot more calmer. We need to be very hydrated at this time. We need to take things easy, because let me tell you one thing, that when I'm talking about these transits, I'm also trying to tell you that how these planets, they trigger us to do a few things. जैसे कभी कभी ना क्या होता है कि जब मैं लोगों से मिलती हूँ तो वो खुद भी जब मुझे बता रहे होते हैं ना क्या हुआ, तो वो खुद बोलते हैं कि पता नहीं मैंने ऐसा कैसा बोल दिया, या पता नहीं मैंने ऐसा कैसे कर दिया. This is not me. I would never say such a thing. I don't know how it came out of my mouth. I don't know how I got into this trap. You know, people say these things, and that's where I want to tell you. Understand where this is coming from. When these planets change, their energies, which are always present around us, in our body also. Because when I'm saying Jupiter, I mean your solar plexus area. I mean your liver, your pancreas. So you got to be very careful about your liver and pancreas. So these planets are also present in you. When I'm saying Mars, I mean your heart and your blood. So if your blood boils, if you're getting more angry, if you're prone to anger and aggression, then obviously the chances of having heart attack and hemorrhages are going to increase. So don't think that these planets are like up there in the sky, you not able to see them, and what the hell, how does this work? Well, every energy has an effect on you, because all that is present in the universe is present in your body. आपके अंदर भी इन ग्रहों की ऊर्जाएं हैं, and you have to understand it. You have to be intellectual enough to understand that how these energies affect your life. So usually when these combinations happen, they make you think a certain way. They make you do certain actions. Okay? So now the reason of giving these predictions is that if these predictions are in your mind, you will think 10 times before getting angry. You will think 10 times before getting influenced by any wrong person. You will think 10 times before maybe doing something, you know. So that's the reason why these general predictions I like to give you, because I just want that you need to know how to maneuver these energies. You need to know how to change the course of your energy, because the best thing is energy cannot be created, cannot be destroyed. It can be transformed from one state to the other. So here is a big hope that comes to you from the world of science and from the world of astrology, that you can always change the course. Okay? So when I'm saying that there are chances of an accident, or there are chances of you getting angry and spoiling something, what you need to do is you need to be consciously calm. What is going to happen anyways, because a lot of it is not in our hands, but our life is in our hands. The war is not in our hand, but our war inside of us is in our hands. Justice is going to prevail at this time, because even though, maybe certain leaders, even the ruling party leaders or the leaders in a big position are facing some sort of a conflict and some sort of a, issue, I will say that face it, because in the long run, you will realize it was all worth it. It was all worth it in the long run. Calm, क्योंकि शनि जो है ना वो Aquarius में है. Believe me, you're only being evaluated on your work. Okay? You're only being evaluated on your work. You're not being evaluated on the optics. You're not being evaluated on your charisma. Okay? You're only being evaluated on your work. So it's the same thing. And I've been noticing the Prime Minister's strategy for such a long time, and
I really appreciate him for so many things because he's learned to balance the way he is with the media. He's balancing. He's not declaring anyone to be his favorite. He's working hard. He's on the ground. He's making use of his time completely. I just heard in one of his interviews where he's saying that I'm doing the rallies and I'm doing the road shows because I want to make full use of my time. So even if the helicopter goes off around sunset, I still want to make use of those 4-5 hours. So I will do my rally. So this is the time of leaders working on the ground. It doesn't matter whether you know someone on the top. It doesn't matter whether you are great friends with the Prime Minister of India. It will not do you any good because you are being evaluated only on your action. You are only being evaluated on your hard work. You're only going to get results of your work. Okay? So no perception management is going to work anymore. No fake attitude is going to work anymore. So it's like, only talk and no action. It's not going to work anymore. So whether God is evaluating you or whether your leader is evaluating you in your organization, whether your boss is evaluating you in your organization, believe me, there's no point taking your boss out for dinner or sending lots of gifts for your boss's wife. It does not matter because you are only going to be rewarded for your hard work. That is exactly what these transits are going to say. Well, of course, it's not going to be that easy, but that is what the Jupiter is going to do for the next 1 year. And of course, there are going to be many more smaller transits that I am going to keep talking about. But because Jupiter's transit in a Rashi is 1 year, okay? So it makes a lot of sense to talk about it and align your life. More than anything else, spirituality is the way forward. It's not a trend. Please, spirituality ko trend mat banaiye. It is not a trend. It is a way of life. That is how you should live your life. So that's about it from my side. Thank you so much. आऊंगी आपके साथ, अभी कुछ और भी बातें करूंगी, कुछ और भी इंटरेस्टिंग ट्रांजिट्स हो रहे हैं. तब तक अपना ख्याल रखिएगा and keep praying and yeah, that's it. Thank you so much. हर हर महादेव.